We have arranged today's webinar. This is an attempt to raise awareness and motivate action on breastfeeding. Breastfeeding is an extremely effective health measure for both mothers and their newborns. Healthy mothers and healthy children are foundations for a healthy society. Societies are built by individuals, and individual behaviors are affected by the structure of the society they live in. In order to instill health consciousness in individuals, society must adopt best healthcare practices as our cultural norms. Only then we can secure our well-being and well-being of our future generations. I am certain our speakers today will help us devise guidelines and strategies on adopting and promoting effective child feeding practices. Let me request our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, to open the webinar and share her views on the topic. Madam, please, over to you. Thank you very much. I congratulate you for selecting a very important topic for today's webinar, and I wish you all the best. I'm sure all the speakers will talk about the significance of breastfeeding in our society, as it is for the point of view of health, as well as it has religious perspective also, and of course the social aspect as well. It's a very important that we make this practice more common and develop that awareness, because unfortunately I see in previous few years it has become a common practice that particularly because of formula milk being very common nowadays, people consider it sometime a convenient choice and probably a better choice. In fact, it's not. There can be nothing can be a good substitute of what is available naturally, because whatever we develop, human beings develop, it can be only used as a substitute when natural source is not available, because anything developed in factories can never be substitute of what nature provides. I personally feel that it's our religious duty, as well as it's our good for our own health, and it develops a very important bonding, which one requires because of our social setup, as well as the psychological aspect to develop bonding between the child and the mother. Even in developed countries, in advanced countries, where people have much longer working hours, they make special arrangements for that in the institutes, at workplaces, even at public places like airports and hospitals and other workplaces. I think that our culture also emphasizes it, and we must not go into the by the flow of the commercialization and just follow the advertisements or what commercial companies try to sell their product and how they propagate for their financial interests. But this is something, as I earlier said, and our religion also advise us, and it's important for our health as well as from psychological and social perspective. I again congratulate the department, the organizer, chairperson of the department and her team for selecting a very relevant topic. And I hope that our speakers will emphasize in more detail by looking at the different aspects of this very important issue, and it would help in raising awareness as well as making it more common in our society, which is very much needed, because most of the time we find children
who are not well developed during their lifetime is mainly because of how they were treated initially, which of course includes these very natural aspects which we have to keep in mind. So thank you very much for inviting me, as well as inviting some very, very eminent speakers to the event. I wish you all the best. Thank you. Thank you so much, madam, for your appreciation and for sharing your thoughts with us. Now, I would like to introduce our first guest speaker, Dr. Shazia Muslim. She is the Associate Professor of Anatomy at HBS Medical and Dental College, Islamabad. She is a graduate of King Edward Medical College. She has done her master's in medical education from Shifa Tamir Millat University. She has completed her MPhil in anatomy from Rifa International University. She has many publications in reputed journals, and she is also serving as a research reviewer for many prestigious medical journals. Madam, kindly share your views on today's webinar. Thank you so much for calling me as a guest speaker in this respected panel group. I would like to share my PowerPoint if you make me a host, Hiba. Sure, ma'am. Yes, you can share your screen. So, Assalamu alaikum once again. Having been introduced very nicely by the chairperson, being a medical educationist, what I want to tell my dear audience is the basics and very logical, physiological concepts behind what we consider as a very important deed, not only in our culture, in our religion, and world over. So, by the end of this session, what we will see would be, just a second, I think it's not moving. Let me share it again. Can you all see the first slide? It's being shared with you. Breastfeeding and its benefits. Yes, we can see. And see the second slide of learning objectives? No, we can't see the second slide. There might be some connectivity problem. Sorry for the delay, but let me share again if it's not proceeding forward. Yes, sure, ma'am, you can share it again. Let me once again share. So if the slideshow is not working, I can use the other way. Yes, now we can, okay, right. We can see the second slide. Let me see if the slideshow now moves. Okay. So the basic learning objectives which we will be dealing, and by the end would to answer the basic questions: why is breastfeeding important? What makes human breast milk recommended for babies, and how breast milk helps a baby develop? And after that, we will correlate the benefits of breastfeeding with physiological mechanisms which underlie lactation, which I think is very much important to get an awareness that how important this thing is for the mother and for the baby. So first comes, why is it significant? Definitely, we have got a religious perspective. Surah Al-Baqarah, ayat number 233. And mothers shall give suck to their children for 2 whole years, and the rest of them is self-explanatory. Plus Surah Luqman and Surah Afaka, everything gives us our moral obligation to Allah's orders. Even not this, but globally it has been recognized by different World Health Organization and United Nations Children's Fund, recommending exclusive breastfeeding of human breast milk for first 6 months of life, for the health of both mother and child, and to continue for up to 2 years of age or beyond. Then comes, what is so important about this breastfeed? Definitely, it is always fresh,
perfectly clean, just of the right temperature. The holding of the child to the mother body, it promotes the bonding which can never ever be matched. It requires no preparation like formula milks, does not require any sterilization of bottles. It's easy, though a bit of training is being required, but then it is always readily available. And finally and foremost is cost effective. In order to understand that how is it important for a child or an infant, I'm not going to go into the details because there are nutritionists in the panel, there are experts of gynae and pediatricians. I'm just giving you a general idea. If you see this thing, then about 86 to 88% of the human milk is made up of water. Rest is 4% of fats, carbohydrates, mainly lactose, 7%, giving the basic energy. The protein building blocks are 1%, rest is occupied by vitamins, minerals, and prebiotics. So in general, look, if you just see 87% water, 7% energy, 4% fat, and 1% protein, and all these nutrient breakdown have given us a quote from American Dietetic Association. Human milk is uniquely tailored to meet the nutritional needs of human infants. It has the appropriate balance of nutrients provided in easily digestible and bioavailable forms. So then, how it helps to build better brains? This has been taken from an article being published in 2020, August, that human milk contains long-chain polyunsaturated fatty acids like linoleic acids, alpha-linoleic acid, and the rest of them. In addition to that, a Turkish scientist has recently discovered that amino acid taurine is in excessive amount found only in human breast milk, unlike bovine or cow's milk. Both of them are very much important for enhancing the development of central nervous system. As we all are familiar that for growth of the brain, we require quite effective nerve impulse conduction, which is being stimulated by a layer of fat known as myelin. So in human milk, what we found is another vital fat, docosahexaenoic acid, DHA, which promotes the formation of the myelin, where myelin is an insulating sheath around the nerves that helps impulses travel faster. So after various research articles, it has been discovered that breastfed babies, they are more intelligent as compared to the one on formula. Now coming to the correlation or the linkage of constituents of breast milk with its benefits, which are not only restricted to the infant, but the mother also gains benefit from breastfeeding. In addition to that, if you see holistically, the family is being also benefited from it. And finally, the society benefits from this simple deed of breastfeeding. So one by one, if we go into the details, linking it physiologically, then the basic benefit to the infant is definitely optimal nutrition, mainly given by the lactose and by human milk oligosaccharides, which are easily digestible by the infant because of the presence of specific enzyme. Exclusive breastfeeding for first 6 months inhibits early introduction of complementary foods that could lead to unhealthy weight gain. Formula feeding leads to higher plasma levels of insulin, which stimulates fat deposition. So no overfeeding, meaning less obesity in children. There is chance of decreased morbidity and mortality from infections among the infants. The most important and frequent infection is respiratory infections in infant age, which leads to its death. And how is it being lessened? Because human milk or breast milk is not a foreign agent for the lungs. Even if, God forbid, it gets aspirated via esophagus, it will not irritate the lungs in a manner like a formula milk, which is a foreign substance. Secondly, specifically, breastfeeding protects against respiratory syncytial virus, which is responsible for causing inflammation of lungs in the young ones. In addition to that, as we have seen in the components of the breast milk, it provides immunological protection, which will be discussed in detail definitely by the nutritionists. The coverage is by the antimicrobial agents. In addition to that, there is IgG, IgM, different type of antibodies. So decreasing the morbidity and mortality among the infants. Another big factor for this morbidity and mortality are the gastrointestinal infections, which are reduced because of breastfeeding. How?
Like diarrhea is being decreased. And the mechanism is human milk oligosaccharides, which are very much specific and are only produced in lactating mammary glands. They are still now cannot be replicated in the formula milk. So how do they reach the colon in almost intact form because of their limited digestion, and thus they reduce the episodes of diarrhea, which can become fatal for the infant. In addition to that, HMO also reduces intestinal pH, which inhibits the growth of harmful bacteria. And at the same time, it has got a positive effect on growth of healthy bifidus bacteria, which is very much necessary for a healthy gut in an infant. Then you must have heard the word of sudden infant death syndrome, SIDS. It has been observed by different researchers that this sudden infant death syndrome decreases in breastfed people, in the infants, because the main reason for SIDS are either respiratory infections, gastrointestinal infections, and this we have already seen that their chances are reduced if a baby is breastfed. In addition to that, when a baby is breastfed, he or she has longer spans of sleep because of full, without any stomach irritation, comfortable, smooth sleep. And these breastfed babies, they wake up more easily than exclusively formula-fed babies. Thus, the SIDS main factor that mostly SIDS, they occur at the time of sleep. So when the babies, they wake up because of easy digestibility of lactose, they wake up more frequently, so there are less chances of SIDS. Now, when we come to the benefits to the mother, in simple words, there are a number of them. If we start from the anti-clockwise, breastfed babies have better sleep, definitely more sleep for the mother, less uterus bleeding and quicker return to its normal size. Lactation provides contraception protection. Quitting bad habits can be carried on easily forwards, thinking in the benefit of the infant. Definitely cost effectiveness and faster loss of pregnancy weight, which I think is more absorbable and more looking forward thing for the young girls, making them aware of the breastfeeding and proceeding with the procedure. But before going into the details of that, I would just like to introduce you to very few hormones, the hormones of lactation, that is prolactin and oxytocin. So what happens when the baby cries? The higher centers, they get activated, they produce two hormones, oxytocin, and the inhibitory cell is being further inhibited, which that is the prolactin inhibitor is reduced. So anterior pituitary gland begins to secrete prolactin, the main hormone which is responsible for milk production in the mammary glands during pregnancy. While when the baby is being latched to the nipples, then mechanoreceptors in the nipples, they send ascending sensory information again to the higher centers, which then cause the prolactin to be released. At the same time, from the posterior pituitary, the hormone oxytocin is being released, which then acts on the smooth muscles present within the mammary gland, and this leads to the ejection of the milk into the mouth. So keeping in mind, prolactin hormone is increased, oxytocin is increased. Then we have to consider the hormones of pregnancy. Everybody is familiar that the hormone estrogen or estradiol is being excessively raised and progesterone is raised to maintain pregnancy. And finally, if we see our menstrual cycle, then the process of ovulation and menstruation all are under the coverage of these hormones, luteinizing hormone and follicle stimulating hormones, which are termed as gonadotrophin. So all these are showing you that when estrogen is raised, the follicle stimulating is being depressed. When progesterone is raised, then luteinizing is being depressed. So now when we see them together, all of them, then we see that in the time of pregnancy, progesterone is raised, estrogen is raised, prolactin is also raised, but is inhibited by the effect of estrogen, as is shown by the light green color. At the time of birth, the oxytocin shown as purple, it goes up, causes contraction of the uterus, while prolactin also rises. Progesterone goes down, estrogen goes down, and later on, depending upon breastfeeding, prolactin and oxytocin keep on moving, showing their peaks depending upon the demand by the baby.
Now, keeping all these important hormones in mind, we can again revisit the benefits which the mothers gain. The immediate benefit to the mother is decreased risk of postpartum hemorrhage, that is the hemorrhage after the delivery because of uterus being a very vascular organ. After the delivery of the baby, it keeps on oozing the blood. So when breastfeed starts, initial suckling leads to secretion of oxytocin, which also causes uterine contractions at the same time. Uterine contractions can reduce bleeding during the third stage of labor and after birth, and this decreases the incidence of iron deficiency as well. While in the long term, if we see, there is decreased risk of breast and ovarian cancers. In addition to that, there is decreased risk of central obesity and diabetes. And how? When we see the main causes of breast cancer and ovarian cancer, the main thing over here is the estrogen exposure. So when the woman breastfeeds, the estrogen remains at a low level. Therefore, the mothers who do not breastfeed, they are exposed to more hormones as compared to those who breastfeed in their total reproductive life. Therefore, less exposure to the estrogen means less risk for the breast cancer and ovarian cancer. In addition to that, definitely when a mother is breastfeeding, she is more conscious that she should share about her nutrition. She always says no to some of the bad things. Therefore, healthy lifestyle lowers cancer risk as well. In addition to that, according to a research done in 2017, it has been discovered that sustained exfoliation of breast tissue, meaning by when the cells secrete milk, like in the lower diagram, they totally evacuate the material out of them, which is known as holocrine secretion of milk. Mature cell dies and becomes secretory border. So sustained exfoliation of breast tissue during lactation could decrease breast cancer risk through elimination of cells with DNA damage and mutations. There is decreased risk of central obesity, that is waist loss, which all the mothers look forward after 9 months of pregnancy. The accumulated fat during pregnancy is used to produce milk. Mothers burn many calories during lactation as their bodies produce milk. So extended breastfeeding, at least 6 months, can help mothers lose weight, but definitely exercise and their diet control can be one of the other factors. Decreased risk of diabetes. For this, we have to understand a normal physiological concept, the pathology behind the diabetes. In a pregnant woman, increased risk of type 2 diabetes for her lifetime is because of her growing weight and rising insulin resistance. Insulin helps glucose enter body cells from blood. Insulin is produced by beta cells of pancreas. In type 2 diabetes, cells become insulin resistant because of fat gain, because of obesity, and fat cells are resistant to insulin uptake, leading to less absorption of enough glucose. So, forcing the pancreas to make more insulin until it cannot keep up and blood sugar rises, leading to type 2 diabetes forever in life. So what happens, it has been seen in a recent research that breastfeeding stimulates cells in pituitary gland to produce hormone prolactin, which binds to beta cells in pancreas, increases beta cells production of serotonin. Serotonin binds to a separate receptor on beta cells and make them further produce more insulin. At the same time, serotonin acts as an antioxidant, protecting beta cells from free radicals, thus reducing long-term risk of developing type 2 diabetes among breastfeeding mothers. In addition to that, as there is less obesity, once a female starts breastfeeding her baby, so there will be less chances of insulin resistance diabetes. And finally, while we see the natural birth control, which is 98 to 80% confirmed if the baby is exclusively breastfed for about 6 months. Suckling inhibits secretion of the gonadotrophin releasing hormone from hypothalamus. Raised prolactin in mother blood decreases responsiveness of ovaries to the gonadotrophins, thus inhibiting ovulation. Lower estradiol production from ovary and lower progesterone level in mother blood. So monthly ovulation and menstruation do not occur and can provide a way of child spacing and family planning at the same time if exclusively breastfed.
Now, the benefits of breastfeeding for families, very holistic. It is free as compared to formula and accessories. Decreased medical care costs because of less infections, less lost work time, and decreased emotional stress caused by illness. And when we see for the society, the benefits of breastfeeding, they are lower healthcare costs, higher work productivity, environmental friendly as no waste and no product transportation or packaging is being involved. So finally, we conclude this seminar. We have seen the benefits of the baby, benefits for the mother, and the take-home message is breastfeeding is not a choice, it's a responsibility. Thank you for listening patiently. So I conclude my session over here. Thank you very much, Madam. That was quite enlightening. We have clearly discussed the medical and non-medical benefits of breastfeeding for a mother and a child, and especially for families. Thank you so much. Our next speaker is Dr. Nashma Shahi. She is a consultant gynecologist at Police Line Hospital, Bhavalpur. She has more than 10 years of experience in this field. She has also served as ex-resident doctor at Victoria Hospital, Bhavalpur. Madam, kindly over to you. Madam, kindly unmute yourself. We can't hear you. Dr. Nashma, we can't hear you. Kindly unmute yourself. I think there is some connectivity issue on her side. We're just contacting her. Give me a few minutes. The types of breast milk includes a colostrum Now we can hear. and first of all, the colostrum, the milk secreted during the first week after the delivery, it's called colostrum. It is yellow, thick, has more antibodies and WBCs. It's secreted in small amount and contain high protein, and it should never be discarded. The next is the transitional milk, the milk secreted during the first 2 weeks. It contains an immunoglobulin and low protein content and increased fat and sugar content. Now, the next is fore milk and hind milk.
Hello. I think there is a connectivity issue on Dr. Nashma's site. She will be joining us in a few minutes. Now the fore milk and the hind milk. Now the audio is audible or not? Dr. Nashma, we can't hear you properly. Can you please reconnect? Now I am audible. Madam, your screen is not sharing with us. She will be joining us again in a few minutes. There must be some connectivity issue on her side. I think she will join us at the end again. Meanwhile, I would like to request our next guest speaker. And it's a great pleasure for me to introduce him, Dr. Tanveer Shah, former Director, Health Bahawalpur Division and former District Health Officer, Bahawalpur. He has also served as the Professor of Forensic Science, Islamia University, and remain associated with the Office of Medical Surgeon Legal, Bahawalpur. So kindly over to you. Share your views with us. Assalamu alaikum, everyone. I think I am audible. Yes, sir. Welcome. Assalamu alaikum, everyone online. It is a matter of great pleasure and honor for me to be here among prestigious personalities like you. Here I am especially thankful to Honorable Vice Chancellor and worthy Madam Mehreen Ejaz and other organizers for providing me such an auspicious opportunity to join this important webinar. Actually, as a matter of fact, my predecessor competent speakers have already elaborated everything in detail, leaving a very little space of expression behind for a rusted senile like me. Probably organizers are trying to formulate and implement a sincere and sustainable
understanding to promote and encourage breastfeeding in the country as a national service. It is really a good approach to involve students and teachers from high-ranking educational institutions for such talks of socio-economic importance, because these are national caretakers of our future. As a teacher, I have experienced it several times that appreciation of youngsters works like a booster tonic for them, resembling the strength of mother's milk. Biologically, Homo sapiens are civilized animals in terms of zoology, but the importance of breastfeeding is equally important in all species. Let me say, it is formulated by the divine as a stress obligation for all zoological mothers. I myself have seen several mothers of other species who refuse to recognize their newly born cub just because of very minute delay in suckling attempts, especially among the buffaloes and cows. I just have shared this irrelevant information to make you realize the emotional and psychological importance of lactation for mothers and for their kids. I will not move in details, but few phenomena are still mystery for science, but these could be resolved through metaphysics or spiritualism. It is very important aspect of our socio-somatic life. Moreover, we must realize that nature is a bit vindictive and stubborn for certain man-made deviations like formula milks. Very little differences. It gives you unsuitable fats. It can give you unsuitable proteins. It may create hazards of indigestion. It can lead to several types of allergies. It may induce suckling problems for the kids. And lastly, obviously, it is expensive. It is difficult for everyone to purchase and buy a formula milk for the kids. There is overwhelming evidence that breastfeeding saves lives by preventing mothers from stress, depression, breast carcinoma, etc. And on the other side, their offspring from several clinical hazards like infections, cot or crib deaths. Furthermore, breastfeeding also reduces the 13% risk of obesity among the kids. Breastfeeding generates a very strong emotional bonding between mother and child. So the benefits of breastfeeding are both short-term and long-term, including the 8,200,000 global prevention of 8,200,000 global child deaths. These are very minute informations which could be shared in the limited time of this webinar. There are many cultural barriers to women feeling comfortable to breastfeeding. A recent survey by Public Health of UK confirmed that many mothers are concerned about breastfeeding in public. The mothers polled were most likely to say that they would feel embarrassed breastfeeding in the presence of people they didn't know. 59% of them felt the same about their partner's family. Yeah, partner family means their in-laws. Every female is shaky before her in-laws. Socio-demographic characteristics have an effect on women's awareness of child health benefits of breastfeeding and how to access support.
Mothers in managerial or professional occupations had the highest level of knowledge. They have the knowledge, but due to their official commitments, they do avoid breastfeedings. They prefer other sources due to their commitments. And definitely, ultra committed mother is a problem for child, and it may provide a problem child, problem personality to the society as well. It is really crucial that mothers are given proper support to understand the value of breastfeeding and to do so successfully. Sensitive mother-centered conversations from pregnancy through to the early years are important to offer mothers to the opportunity to discuss infant feeding and relationship building. It is very necessary, and I'm very much hopeful from all our kids listening here and our worthy doctors and participants that they will definitely convince their society, their surroundings for the benefits of this breastfeeding. In UK, which is a developed and westernized country, there is a widespread misconception that breastfeeding is largely unnecessary because formula milk is seen as a close second best. A recent survey of mothers with young children commissioned by Public Health of England found that many mothers are unclear about the benefits of breastfeeding, where education standards are far better than our country. But their mothers are really unaware of the benefits of breastfeeding. So, what is the situation here? According to our religion, it is not compulsory for a mother to feed her child. It is not a compulsion for mother. And according to religion, even mother can charge her husband for the payments of milk provided to the child. It is right of mother according to religion. But on the other side, our religion encourages mothers for breastfeeding for at least 2 years. And it provides a natural way of contraception as well. It delays the pregnancy. Clinically, it is advisable that the distance between spacing between the two child should be at least 2 years. And breastfeeding is the best way to achieve that target. Bottle feeding and breastfeeding, parents like need clear, unbiased, factual information about the infant feeding. But companies who make the formula milks spend millions on sophisticated, often confusing advertisements and marketing tactics to promote their products and undermine the actual benefits of breastfeeding. The International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes aims to restrict the advertisement of food and drink intended for babies. This ensures that all parents, whether breast or bottle fed, are protected from harmful marketing and given only scientific, factual, and evidence-based information about infant feeding. There are several other hazards what a mother can face. Lack of nutrition, which is very common in our society. According to the clinical approach, pregnancy is a burden for the health of mother, and she needs proper care. She needs proper diet during the pregnancy, which is usually taken care of according to the norms of our society. Exceptions are always there. But when mother starts lactation, lactating mother needs extra care, more than the care of pregnancy. It is a big burden
even more than the burden of pregnancy, lactation is a big burden for the health of mother. So she needs really extra care. But our society, nobody cares about the lactating mother. They take it as casual. It is a routine matter, and it damages the health of mothers a lot. So we must convince the people that what care you are providing to the pregnant mother should be provided to the lactating mothers as well. Any question from any side, that will be welcome. Probably I have taken too much time. Thank you so much, sir, for bringing such depth into the conversation. We have highlighted the true facts about the behavioral trends and approaches of our today's society. Thank you so much. Welcome. Now I would like to introduce our next speaker, Dr. Mudassira Yassin. She is an associate professor of pharmacology at Federal Postgraduate Institute, Sheikh Zayed Complex, Lahore. She is also doing her PhD in pharmacology from the University of Punjab. Madam, over to you. And your screen is sharing with us, but we can't hear you right now. There's some distraction at your side. I'm Dr. Mudassira. I am Assalamu alaikum. I am Dr. Mudassira. I am Associate Professor of Pharmacology at Federal Postgraduate Medical Institute, Sheikh Zayed Hospital, Lahore. My learning objectives of presentation are that why it's important to breastfeed a baby, what are the 10 common myths which are related to breastfeeding and their truths, and what are the problems which are faced by the mother during breastfeeding and their solution. So breastfeeding is the feeding of an infant or young child with breast milk directly from female human breast, and it is not by the baby bottle or any other container. And in exclusive breastfeeding, the infant receives only breast milk and no other liquid. So Quran says about breastfeeding is, mothers shall breastfeed their children for 2 whole years for those who wish to complete the term. According to UNICEF statistics, under 5 mortality rate per 1,000 live births is 74, and neonatal mortality rate is 44 per 1,000 live births, and the death is due to pneumonia and diarrhea. And in Pakistan, exclusive breastfeeding is about 37.7%. And the children which are exclusively breastfed for the first 6 months of life are they are more survived, 14 times more likely to survive than the non-breastfed children. So breastfeeding is important for the infants for their survival. Composition of the breast milk is that it contains proteins mostly, plus it is having vitamins, plus it is having some additional constituents which are lactoferrin, which is inhibiting the growth of iron-dependent bacteria in the GIT. So lactoferrin plus
there are antibodies, and these antibodies, IgA and IgM antibodies, they prevent bacterial growth in the GIT. So in this way, they prevent diarrhea in the babies. तो इसमें जो इसकी कंपोजिशन प्रोटीन्स की और एंटीबॉडीज की है, उसकी वजह से जो है वो डायरिया, प्लस दे आल्सो inhibit the more bacteria in even in case of pneumonia, they prevent pneumonia in the children. Plus, they are having fats which are necessary for brain development, and some vitamins are there. So the composition of human milk is that they promote the growth of the baby, plus they prevent the diseases in the baby. During emergency situation, breastfeeding helps a mother and the baby, like it protects against respiratory diseases and diarrhea in crowded environment. Plus, it also prevents hypothermia, जो baby का temperature low हो जाए, उसमें कि mother जो skin to skin contact होता है इसमें, तो वो भी कम हो जाता है, उससे उसको हम prevent कर सकते हैं. Plus, the most important advantage of breastfeeding is that it is readily available at all times. So there are some myths about breastfeeding. Number one myth is that first day milk is yellow and thick, and people thought that it is unhealthy for the baby. जो पहले दिन का दूध है, उसकी ट्रेडिशन थी कि वो फेंक दिया जाता था, जबकि now we know that this is actually colostrum and it is superfood for the baby. And colostrum is actually high in protein and it is rich in antibodies, so it should be given to the baby. So first feed of the baby should be colostrum. तो इसको फेंकना नहीं है, इसको जो है बेबी के लिए ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि उसको फर्स्ट फूड जो है उसकी वो रिच इन प्रोटीन्स भी हो, प्लस उसमें एंटीबॉडीज भी ऐड कर दें. सेकेंड मिथ जो है इसमें ये था कि सी सेक्शन के बाद जो मदर है उससे जी रेस्ट दें और उसको जो है वो बेबी को फीड नहीं कराना चाहिए. सो वी शुड एक्चुअली एनकरेज द मदर एंड द फैमिली फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग. और इसमें डिफरेंट पोजिशंस हैं जो मदर को हम बताते भी हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो लाइन डाउन पोजिशन में कर सकती है, जिसमें मदर कंफर्टेबल हो. इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हम इसकी सी सेक्शन के भी दे बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करते हैं मदर के साथ. एंड थर्ड मिथ जो है इसमें ये है कि मदर को कहा जाता था पहले कि मदर शुड नॉट टेक some things in food like carrots and cabbage. इससे उनको लगता है कि बेबी को जो है वो उसमें कोलिक की पेन हो सकती है, पेट में गैस हो जाती है या पेट दर्द की उसको शिकायत होती है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मदर शुड टेक हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट, और उसकी डाइट में सारी चीज़ें होनी चाहिए. कुछ भी जो भी चीज़ मदर लेती है वो बेबी को डेफिनेटली जाती है ले, और वो उसको जो भी जैसे कैल्शियम लेगी दूध के ज़रिए वो कैल्शियम बेबी को जाएगा, और जितनी हेल्दी डाइट होगी उतना ही जो है वो बेबी भी हेल्दी होगी. थर्ड इसमें जो है ये था कि मदर जो है उसको फ़ौरन बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए. ये जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि फ़ौरन जितनी जल्दी बच्चे को मदर के साथ अटैच करेंगे, जितनी जल्दी मदर ब्रेस्ट फीड करेगी, उतना ही जल्दी बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी ये अच्छा होगा कि उससे फिर एंगोज ब्रेस्ट नहीं हो. Fourth myth is that mother should not breastfeed if she is sick. अगर वो बीमार है वो बिल्कुल नहीं उसको कराना चाहिए. इसमें बीमारी का हम देखते हैं कि किस टाइप की बीमारी है मदर को. आम रूटीन के जैसे फीवर हो गया या कोई और सिकनेस है तो उसमें तो मदर को हम नहीं कहते. But there are also some contraindications to breastfeeding which are active and untreated tuberculosis अगर है उसे, plus the mother is a cancer patient, like she is on radioactive compounds,
or mother is taking some addictive drug like amphetamines है, alcohol है, तो उसमें these are the contraindications for breastfeeding. Plus some diseases like AIDS and herpes simplex infection जो है उसमें भी मदर को कहा जाता है कि वो breastfeed ना कराए. अदरवाइज जो मदर रूटीन की अगर उसमें कोई सिकनेस कोई आ जाती है तो उसमें मदर शुड नॉट स्टॉप breastfeeding. Another myth is that if the mother is taking any medication, then she should not breastfeed. अब इसमें डिपेंड करता है कि मदर जो है वो कौन सी इसमें ड्रग्स ले रही है. There are some drugs which are safe in lactation, like some antibiotics, cephalosporin and penicillins, they are safe. While chloramphenicol, quinolones, sulfonamides and tetracyclines, they are not safe because these drugs, they are having effect on bones of the baby. और ये टेरेट्रोजेनिक भी होती हैं, प्रेगनेंसी में भी नहीं लेते और लैक्टेशन में भी हम ये वाली अवॉइड करती हैं. सो वी हैव एक्चुअली अल्टरनेटिव ड्रग्स to these drugs like cephalosporin and penicillin, they are safe. Similarly, anti-diabetic insulin is safe, but we should avoid metformin. Anticoagulants, heparin and warfarin, they are safe. Analgesics, paracetamol, जो पेनाडोल के ट्रेड नेम से आती है, किसी भी पेन किलर के तौर पे यूज़ की जा सकती है. इसी तरह एंटीथायराइड ड्रग्स में प्रोपाइलथायोयूरासिल is preferred over other antithyroid drugs. Then we have anticonvulsant drugs like carbamazepine and phenytoin. Oral contraceptives मेयर्स में जो मदर को हम एडवाइस करते हैं कि प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स लें या मिनी पिल्स के नाम से ये आती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, बिकॉज ओस्ट्रोजन इज डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. तो इसमें प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, प्लस अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जिसमें IUCDs हैं या कॉपर टी अगर सूट कर जाती है मदर को तो वो भी हम एडवाइस करते हैं इसमें. इसके अलावा एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन जो है वो दी जा सकती है अगर एस्थमा है या कोई और एलर्जिक फैक्टर्स. वर्किंग मदर्स के ऊपर भी है कि दे शुड नॉट गिव ब्रेस्ट मिल्क और दे कांट गिव एक्चुअली. उसमें ये है कि मदर्स जो हैं वो कोई इसमें अरेंजमेंट किया जा सकता है जैसे डे केयर सेंटर्स हैं. प्लस इसमें जो है मदर उस टाइम पे तो चले कोई उसका अल्टरनेटिव कर सकती है, लेकिन जब मदर घर हो और उस दौरान जो है शी शुड ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड. तो इसमें इसके अलावा फैमिली मेंबर्स उसको इनकरेज करें, कोई एक्सप्रेस मिल्क दिया जा सकता है उसमें जो चाइल्ड को. Some mothers think breast milk is poisonous and should not be given to the baby because milk kills worms as it is poured on them. इसकी रीजन ये नहीं है कि वो poisonous है, actually it is the reason that the worms die due to drowning and suffocation. Then ninth myth is that फॉर्मूला और या बॉटल फीड और ब्रेस्ट फीड को दोनों को साथ साथ नहीं चलाया जा सकता. इट इज नॉट सो. दोनों को जैसे वर्किंग वुमेन जो है वो दोनों को साथ साथ चला सकती है लेकिन जब वो घर पे वर्किंग वुमन तो उसको फिर ब्रेस्ट फीड मैक्सिमम कराना चाहिए अपने बच्चे को, जिसमें जो है बच्चा एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता है, निपल्स दोनों डिफरेंट होते हैं. तो लेकिन ये है कि अगर इसको बड़ा स्किल तरीके से चलाया जाए तो बच्चा दोनों के ऊपर चल जाता है. एंड 10th मिथ जो बहुत कॉमन है और ये बहुत मैं सुनने में आया है कि जी माँ का दूध नहीं पूरा पड़ रहा और माँ को इस वजह से बॉटल फीड पे जाना पड़ रहा है कि मदर इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ मिल्क. इसके लिए मेयर्स हैं. सबसे पहले तो ये है कि उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं. मदर को रिलैक्स रखें, उससे भी उसकी मिल्क प्रोडक्शन पे इफेक्ट आता है. प्लस mother should frequently breastfeed the child. Third
thing is that mother should take healthy diet, प्लस इसमें पानी का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, लिक्विड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो तब भी जो है वो इसमें मिल्क प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। और जो बेबी है उसको भी कहा उसको रिमूव ना करें, जब तक वो दूध पीता रहता है उसको ब्रेस्ट फीड करवाएं। So these were the 10 myths regarding the breastfeeding. अब इसमें जो है न्यूबॉर्न्स को we should 5 to 10 minutes for every 2 to 3 hours, after every 2 to 3 hours. So there will be 10 to 12 feedings, और इसमें डिपेंड भी करता है बेबी जब भी फीड मांगे उसको फौरन दें, और बाज़ औक़ात जो है बेबी को उठा के भी फीड दें अगर आपको लगता है कि नहीं अब इसका टाइम हो गया है, और उसके लिए बच्चे की पाँव के ऊपर थोड़ा सा उसको करते हैं इरिटेट पाँव पे, तो बच्चा फिर उठ जाता है छोटा। ये इन्फेंट्स की मैं बात है। इसके अलावा जो भी बच्चे 1 मंथ उससे ज़्यादा के हैं तो उन्हें भी जितना मैक्सिमम ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं वो ब्रेस्ट फीड करें। सो अब नाउ वी हैव प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें जो है सबसे वही वाली बात कि लैक्टोजेनेसिस की प्रॉब्लम भी आती है। समटाइम्स देयर इज डिलेड लैक्टोजेनेसिस कि फ़ौरन दूध नहीं आता है, कोलोस्ट्रम फेज और कोपियस मिल्क प्रोडक्शन में जो है वो डिले होता है। इसमें सबसे ये है कि इसमें फ़ौरन से जितना जल्दी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा उतना ही जल्दी जो है उसमें मिल्क प्रोडक्शन होगी, और फ़ौरन डिलीवरी के फ़ौरन बाद कोशिश करें कि मदर और बेबी को एक दूसरे के साथ अटैच करें। इसके अलावा फेल्ड लैक्टोजेनेसिस है, और इसके भी जो है फेल्ड लैक्टोजेनेसिस को भी ट्रीट किया जा सकता है। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स है वही साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मदर के ऊपर है। उसके अलावा जो है वो मेटर्नल ओबेसिटी और hypertension है, plus the mother may be diabetic or the mother is having gestational diabetes, pregnancy के दौरान भी डायबिटीज होती है, तो उससे भी ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। अब बच्चे में भी इसमें प्रॉब्लम्स है, डिसफंक्शनल सक्लिंग हो सकती है, और इनएफिशिएंट सक्लिंग भी एक प्रॉब्लम है इसमें। So we have to maximize breast stimulation करें इसमें, ब्रेस्ट मसाज, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, बेबी को ब्रेस्ट के साथ फौरन विद इन द फर्स्ट आवर पोस्ट बर्थ करें, जिसमें सिजेरियन में स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा द ब्रेस्ट फीड शुड बी 12 times per 24 hours, and then hourly for 3 to 4 feedings until blood glucose is stable। जो बच्चे का भी देखना होता है अगर मदर इज हैविंग गेस्टेशनल डायबिटीज। एक और प्रॉब्लम इसमें आती है, सोर निपल्स हो जाते हैं, राइट, उसमें जख्म बन जाते हैं, तो उसमें भी हमें ब्रेस्ट फीडिंग में पेरेंट्स मदर को प्रॉब्लम आती है। अब इसमें निपल इश्यूज हैं, फ्लैट निपल ज़्यादा, डिम्पल निपल्स हैं, समटाइम्स द निपल्स दे आर इन्वर्टेड। अब इसके जो ट्रीटमेंट है कि इसमें ब्रेस्ट पंप हम यूज़ कर सकते हैं, सक्शन सिरिंज कैन बी यूज, राइट, टू ड्रा आउट अ फ्लैट निपल, एंड इसमें जो फ्लैट निपल्स एंड इन्वर्टेड निपल्स की जो मैनेजमेंट है, जो एक सिंपल मेथड है जो घर में भी यूज़ किया जा सकता है, उसमें यह है कि आप 10 cc की सिरिंज लें, और उस 10 cc की सिरिंज का जो ये वाला पार्ट जहाँ पे नीडल लगी होती है उसको कट कर, राइट, विद अ ब्लेड और या फिर कोई नाइफ होल्ड करके उसको कट कर दें। और उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 पे इसका जो प्लंजर है इसको रिमूव करें, और ये वाली इसकी स्मूथ साइड है, राइट, एंड दिस स्मूथ साइड शुड बी फिक्स्ड टूवर्ड्स द nipple of the mother, right, and then you gently pull the plunger and it will produce a pressure, and in this way this nipple is formed, right। उसके फौरन बाद बेबी को जो है वो फीड करवाएं। ये चीज़ें मतलब फीड कराने से पहले करें और साथ ही फीड कर दें। इस कुछ अरसे के बाद जो है वो इसमें निपल फॉर्मेशन हो जाएगी और बेबी को इजी होगा ब्रेस्ट फीड कराना।
Second problem of breastfeeding is poor latch on, right, because of cracked nipple or infection. अब इसमें जो है वो cracked nipples में there is pain on breast, cracks are there, there can be bleeding, infection भी हो सकती है. तो इसमें best ये है कि good attachment हो उनकी. इसके अलावा bottles ना आप use करें, soap और cream on the nipple नहीं use करनी है. This is the picture of cracked nipple. अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रॉपर जो क्रैक निपल की रीजन है वो ये है कि बेबी प्रॉपर नहीं लेता निपल को अपने माउथ में. तो द बेबी शुड कवर होल एरियो, राइट. ये इसमें प्रॉब्लम है कि पूरे एरियोला, क्योंकि यहाँ पे सारी नाव वेंडिंग्स होती हैं, तो एरियोला का रीजन फुल अगर वो ले तो फिर उसमें क्रैक्ड निपल नहीं होता है, का चांसेस कम है. देन इसमें जो है ब्रेस्ट फीडिंग को आपने जो है वो स्टॉप नहीं करना, राइट. जिस साइड पे आपको कम पेन होती है उस साइड से ब्रेस्ट फीड करिए, दूसरी साइड से जो इसको एक्सप्रेस कर मिल्क. देन ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशंस को अपनी चेंज करते रहें, राइट. इसके अलावा जो है ब्रेस्ट मिल्क को ब्रेस्ट के निपल्स पे लगाएं. इट इज़ आल्सो हैविंग हीलिंग इफेक्ट. सोप और क्रीम नहीं यूज़ करनी. अगर इन्फेक्टेड निपल्स हैं देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है. इसमें एंटीबायोटिक्स बाजू का पेशेंट को देनी पड़ती हैं, तो इसमें ज़रूर इसको अगर बहुत ज़्यादा ये नहीं हीलिंग हो रही तो देन यू मस्ट गो टू द डॉक्टर. एंगोज ब्रेस्ट की भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आफ्टर डिलीवरी भी ये आती है. इसके अलावा 10 या 15 डेज के बाद भी ये प्रॉब्लम आती है एंगोज ब्रेस्ट की. इसमें जो है एंगोजमेंट कैन अकर इन बोथ ब्रेस्ट. स्वेलिंग, टेंडरनेस इज देयर, वहाँ गर्म होती है. इसके अलावा redness is there, so much pain, right. Skin is shiny and tight. So it can begin after 3rd and 5th and even after 15 days. बेस्ट इसकी प्रिवेंशन ये है कि अटैचमेंट आपकी इसमें बच्चे के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो. इसके अलावा जो है विद इन एन आवर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दें. इसके अलावा इसको डिमांड पे भी ब्रेस्ट फीड करें जब भी बच्चा डिमांड करे, और बल्कि उसको उठा के भी अगर आपको लगता है कि हाँ इतना टाइम हो गया तो उसको, यानी फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी देयर टू प्रिवेंट एंगोजमेंट. अगर एंगोजमेंट हो जाती है तो फिर इसमें जो है वो इसका ट्रीटमेंट ये है कि हॉट वाटर बाथ लें. इसके अलावा हॉट टॉवल जो है वाटर में सोक करके उसको ब्रेस्ट के ऊपर रखा जाए, ब्रेस्ट पंप से मिल्क एक्सप्रेस किया जाए. तो ये सारे जो हैं ये मेजर्स थी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड मिथ्स related to breastfeeding. So actually, as doctors and healthcare providers, it is our duty to promote breastfeeding and to avoid formula milk. And as future mothers and parents, it is our obligation to follow the rules of breastfeeding when there is no contraindication. Actually, this picture I have added that breast cow's milk is only for baby cows, and here is a picture which is showing that there is no boundary which can reduce bonding between mother and her child, and you can see that there is no boundary for breastfeeding. Thank you very much. Thank you so much, Madam, for communicating an important information with our audience. That was quite enlightening and motivating. Now our next speaker is going to speak more into this, and she is Dr. Samra Imran. She is Associate Professor and Head of the Department at University of Home Economics. She has done her PhD in Food and Nutrition from Punjab University. She has received a Roll of Honor in her BSc, and she also got first position in MSc and postgraduate diploma. She has almost 23 years of teaching experience in graduate, postgraduate and postgraduate diploma courses. She is also an active member of Pakistan Nutrition and Dietetics Society. Dr. Samra, kindly over to you. Assalamu alaikum, all of you.
Can you share? Can you see the screen on your laptops? Yes, we can see. अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली थोड़ा सा मैं भी महरीन से ये कह रही थी कि थोड़ा सा मुझे रश करना पड़ेगा एक मीटिंग की वजह से और थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन को, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा क्योंकि तकरीबन बहुत से पॉइंट्स जो हैं रिलेटेड टू द न्यूट्रिशनल सुपीरियरिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क और उसके अलावा प्रॉब्लम्स जो हैं एनकाउंटर्ड कॉमनली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी वर्दी स्पीकर्स ने डिस्कस कर ली हैं। तो इसमें जो आज का टॉपिक है और उसमें किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ कंट्रीब्यूट करती है और उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, उसी को मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ। और एक चीज़ जो कि मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी वो ये है कि मैं अभी ये देख रही थी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वेबिनार वो हमारे बहुत थोड़े हैं। डेफिनेटली आप फेसबुक पेज पे भी अपना कर रहे हो और स्टूडेंट्स जो हैं वो देख रहे हैं। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं एट दिस स्टेज, क्योंकि दे आर द फ्यूचर मदर्स, जिनको ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। और इस बारे में मेरा ये ख्याल है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमें इसको पार्ट ऑफ द सिलेबस करना चाहिए। जो ये सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं उसकी वजह ये है कि जब मदर्स यूजुअली पहले बच्चे की दफ़ा तक तो क्योंकि नॉलेज भी नहीं होती, एक्सपीरियंस भी नहीं होता, तो वो उसी में पहला बच्चा तो जो है ना वो यूजुअली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती मदर। तो उसमें यह है कि अगर नॉलेज हो पहले और मोटिवेशन हो मदर की पहले से, तो मेरा ख्याल है वो मोटिवेशन बहुत हेल्प करती है द मदर कि वो ब्रेस्ट फीड करे। क्योंकि इवन मैंने अपने स्टूडेंट्स डाइटिशियंस को देखा है कि वो कई दफ़ा नहीं करा पाते ब्रेस्ट फीड अपनी जॉब के इश्यूज की वजह से और लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से, जो कि हमारी जॉब प्लेसेस में हमें नहीं मिलती सपोर्ट। तो ये चीज़ बहुत फिर एक सैड एक वो चीज़ है कि हम जितने मर्जी वेबिनार्स और वो चीज़ें करा लें, लेकिन ये है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से नॉलेज के बावजूद जो है, स्पेशली जैसे किसी ने अभी एक हमारे वर्दी स्पीकर ने कहा भी कि जो सबसे ज़्यादा नॉलेज है वो वर्किंग वुमेन की होती है। और हम जिस फील्ड से हैं, और अगर हम अभी कंपेयर करें कि हमारे ही डिसिप्लिन में जो मदर्स हैं उन्होंने कितनी मदर्स हैं जिन्होंने 2 इयर्स तक ब्रेस्ट फीड कराई है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी परसेंटेज है बहुत अच्छी ना हो, उतनी अच्छी ना हो जितनी होनी चाहिए। तो एनीवेज इसको अब हम शुरू करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है बेसिकली बहुत ही पावरफुल फोर्स है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसकी मेन वजह ये है कि इट रिड्यूसेस मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन अंडर 5। ठीक है, हम सुन चुके हैं कि ऑब्वियसली इट इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म हेल्थ, जिससे आप देखें कि आगे कितने सारे इकोनॉमिक बेनिफिट है, और इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम डिजीज। आपके हेल्थ केयर कॉस्ट कितने कम हो जाते हैं, इट बूस्ट देयर इम्यून सिस्टम्स। उसके अलावा ये है कि मदर्स के लिए कितना ये हेल्पफुल है। और जो ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सेलिब्रेट करती है कि द रोल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेस्ट मिल्क का इन एम्पावरिंग द चाइल्ड एंड इन एम्पावरिंग द वुमेन एंड देयरफॉर एम्पावरिंग द कम्युनिटी एंड द कंट्री। क्योंकि इसीलिए अब हम देखते हैं कि जितने हमारे न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म्स हैं या इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग के हैं या फिर जितने भी बिहेवियर चेंज प्रोग्राम्स हैं, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो उसका जिक्र आता है। और इसमें एक फिगर जो है बड़ी अलार्मिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितनी हमारी डेथ्स रिपोर्टेड है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है इट कैन रिड्यूस ड्रास्टिकली द नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन। तो ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, स्पेशली इन फुलफिलिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और इसमें हमें पता है कि ना सिर्फ ये कि बच्चा हेल्दी होगा, उसमें इन्फेक्शंस कम होंगी, बल्कि उसका IQ ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से हम देखेंगे कि वो इवन ज़्यादा मनी भी अर्न करेगा लेटर ऑन, ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होगा लेटर ऑन। ये बहुत सारी स्टडीज़ ने शो किया है जो कि अभी आगे आएंगी।
तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है इट इज रिकग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू जिसकी बहुत एनॉर्मस सोशल इकोनॉमिक implications है. Infants who do not receive breast milk are likely to experience poorer health outcomes than breastfed infants. और ये भी बात ऑलरेडी हमारी पहले स्पीकर ने कर दी है कि किस तरह से ओबेसिटी, इवन जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है उसको उसके साथ नेगेटिवली कोरिलेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग, और मदर्स की जो रिस्क हैं वो कम करती है. अब अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की बात आई. अर्ली इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्ली इनिशिएशन की वजह से ही आगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो भी प्रमोट होती है, और उसके अलावा जो 2 years तक WHO ने रिकमेंडेशन दी है वो भी मदर पूरी कर सकती है अगर अर्ली इनिशिएशन हो. अर्ली इनिशिएशन क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 hour ऑफ बर्थ. अब उसमें हमारा सबसे ज्यादा इशू जो आजकल आ रहा है वो सिजेरियन सेक्शन का है. हम बहुत सारी स्टडीज ने ये शो किया है कि मदर्स जो हैं वो अर्ली इनिशिएट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जब तक वो एनेस्थीसिया से रिकवर करती हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं अभी आगे डिस्कस करती हूँ जिसकी वजह से अर्ली इनिशिएशन नहीं होती, और जिसकी वजह से फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो भी नहीं हो सकती. ऑलरेडी ये डिस्क्राइब कर दिया सबने, तो मैं इन डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगी. तो बेसिकली अर्ली इनिशिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. इट प्रोवाइड्स एंटीबॉडी प्रोटेक्शन टू द इन्फेंट एंड इट रिड्यूसेस पोस्टपार्टम हेमरेज, और उसके अलावा इट हेल्प्स इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months एंड कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 years. अच्छा, ये चीजें जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो गई हैं इनको मैं स्किप कर रही हूँ, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स टू द मदर हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द मदर हैं, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो गई. अच्छा, अब हमारे लिए जो अभी मैंने बात की है कि एक बहुत बड़ा जो जिसको मैं कहूँगी लम्हा फिक्रिया ही कहूँगी, वो ये है कि इतनी ज्यादा स्ट्रेस के बावजूद अगर हम देखें तो हमें स्टडी बताती है WHO की कि स्लाइटली मोर देन हाफ यानी 57.6% मदर्स जो हैं वो इनिशिएट करती हैं, अर्ली इनिशिएट करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग को इन 24 कंट्रीज. और ये आप देखें कि बहुत ही कम है, क्योंकि जितनी अवेयरनेस पिछले 1-2 डेकेड्स से इसके ऊपर है उसके बावजूद हमें बहुत कम मिल रहे हैं रिजल्ट्स. अच्छा, उसमें मेन जो है वो सिजेरियन सेक्शन है, और इसमें हमने देखा कि 79% लोअर ऑड्स जो हैं वो एसोसिएटेड है ब्रेस्ट फीडिंग के अगर सिजेरियन सेक्शन होता है एज कंपेयर्ड विद द विजाइनल बर्थ. तो ये बहुत ज्यादा देखने की बात है कि सिजेरियन सेक्शंस जो हैं वो इतनी फ्रीक्वेंटली जो हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में. जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सिजेरियन सेक्शन मतलब कोई नॉर्मल डिलीवरी आजकल हो तो लोग बड़ी हैरत से देखते हैं कि अच्छा नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और एक नॉर्म बन गया है कि सिजेरियन सेक्शन होगा. और ये चीज बहुत ज्यादा नेगेटिवली कोरिलेटेड है विद द ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि मदर पेन में होती है, मदर को अपनी उसमें नहीं होती, तो अर्ली इनिशिएशन जब नहीं होती तो उससे बहुत सारी चीजें आगे फिर ठीक नहीं चलती. तो ये चीज जो है यहाँ पर बहुत सारी मतलब हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और वो ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिस एक चल पड़ी है इसको प्रूव करना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई इतने ज्यादा सिजेरियन सेक्शंस होने चाहिए या जरूरी होते हैं, या फिर ये है कि ये इसके अंदर और बेनिफिट्स इन्वॉल्व होते हैं. जो रिकमेंडेशंस हैं वो हमें पता चल गई हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए फॉर 6 months, और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 12 months तक हो, मगर WHO कहती है कि 2 years तक हो. अब इसमें हम देखते हैं कि इवन अमेरिका में जहां पर इतनी ज्यादा अवेयरनेस और इतनी सारी इसके ऊपर काम है, उसके बावजूद जो फर्स्ट बर्थडे जब बेबी की होती है तो लेस देन 5% ऑफ द अमेरिकन मदर्स आर स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग. यानी अगर अर्ली इनिशिएशन हम देखते हैं कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द मदर्स ने कर भी ली है, तो भी विद इन फर्स्ट ईयर वो बहुत कम मदर्स हैं जो फर्स्ट ईयर का माइलस्टोन अचीव कर पाती है. ये जो अभी मैंने बात की है कि बेबीज हु आर ब्रेस्ट फेड फॉर एटलीस्ट अ ईयर ग्रो अप टू बी significantly more intelligent as adults and earn more money. अच्छा, अब ये चीज तो आ गई कि जो हमने बात की कि बच्चे के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा
कि मदर की हेल्थ जो है उसके ऊपर उतना फोकस नहीं होता। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें कही हैं। एक तो ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू से ये मदर के लिए मतलब एक प्रेफरेंस के तौर पे एक चीज आई है कि मदर जो है वो फीड कराए, बट इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि अगर मदर जो है वो उसके लिए मनी भी डिमांड कर सकती है, तो उसकी वजह ये है कि मदर की हेल्थ और मदर की न्यूट्रिशनल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत सारे फोरम्स ऐसे अटेंड किए हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जिसमें जब ब्रेस्ट फीडिंग की बात आती है तो मदर की हेल्थ को टोटली इग्नोर किया जाता है। और इनफैक्ट कुछ ऐसे भी हुए हैं जिसके अंदर जो मदर्स उन्होंने ला के बिठाई हुई थी वो इतनी मैल नरिश थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि अगर उन्होंने ब्रेस्ट फीड करा दिया 1 साल या उससे ज्यादा तो वो उनका अपना सर्वाइवल जो है वो कितना ज्यादा इंडेंजर हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फोकस अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे करना है तो उसके लिए हमें बच्चियों की हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। और वो फोकस प्रेगनेंसी में नहीं करना, वो फोकस हमें उनके अर्ली टीन्स में करना है। इनफैक्ट ज़ाहिर चाइल्डहुड ईयर्स से शुरू होती है चीज, बट एटलीस्ट उसके उनके अर्ली टीन्स में हम देखें क्या वो एनीमिक तो नहीं है, क्योंकि मदर जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में बेबी जो है वो एज अ पैरासाइट उसको ले रहा, मतलब एज अ पैरासाइट वो ग्रो कर रहा होता है। तो मिल्क की क्वालिटी तो आपकी नहीं होगी कम, लेकिन मदर के स्टोर्स डिप्लीट हो जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, आगे बोन हेल्थ उसकी बेतहाशा इफेक्ट होती है। और इसी तरह उसकी ओवरऑल जनरल हेल्थ बहुत सारी डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो अगर वो टेक केयर ही नहीं कर पाएगी आगे बच्चे की, तो वो भी कोई इतना अच्छा सिनेरियो नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को की बात करने के साथ साथ हमें मदर की हेल्थ की बात बल्कि उससे पहले करनी चाहिए। अपनी जो बच्चियां हैं उनकी हेल्थ की बात उससे पहले करनी चाहिए, ताकि वो हेल्दी मदर्स हों और वो लैक्टेट करा सके। तो वैरायटी ऑफ फूड्स आर रिक्वायर्ड। हम देखते हैं कि 1800 किलो कैलोरीज से कम तो होनी ही नहीं चाहिए उनकी इनटेक। और हमें सेमी स्टारवेशन डाइट्स पे मदर्स मिलती हैं जो लैक्टेट करा रही होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एडिशनल 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। 20% ऑफ द कैलोरीज शुड बी कमिंग फ्रॉम प्रोटीन। आपको ये जो हेक्सानोइक एसिड है, आपको ये पॉलीअनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स चाहिए। फिश की कीमत आपको पता है, ट्वाइस अ डे अगर रिकमेंडेशन है, मदर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, इन सब चीजों को देखना जरूरी है। मिनरल्स की, विटामिन्स की इनटेक, जाहिर है फ्लूइड इनटेक इज इम्पोर्टेंट, लेकिन एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक की जरूरत नहीं होती। जितनी प्यास है उसके हिसाब से वो पिए। टॉक्सिन्स और नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो हैं, मसलन पिका, हमारी बहुत ज्यादा मदर्स जो हैं प्रेगनेंसी में वो पिका जो है वो कर रही होती है, नॉन इनएडिबल सब्सटेंसेस की इनटेक। और उसका वन रीजन जो है कैन बी दैट दे आर एनीमिक एंड दे आर डेफिशिएंट इन मोस्ट मिनरल्स। तो ये तो एक चीज आ गई जो मदर्स की डाइट के हवाले से है। फिर ये देखना भी बहुत जरूरी है हेल्थ केयर टीम का कि लैक्टेशन इज अ यूनिक जर्नी फॉर एवरी मदर। ये एक स्टडी है 2019 की, जिस है तो ये प्री टर्म इन्फेंट्स के लिए के ऊपर हुई है, बट मेरा ये ख्याल है कि इसको हम जनरलाइज करके भी देख सकते हैं कि लैक्टेशन ये वल्नरेबल सिचुएशन है फॉर एवरी मदर, स्पेशली प्री टर्म मदर्स के लिए जरा ज्यादा है, बट फॉर एवरी मदर जिसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, जिसको और इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंसेस, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मदर्स की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम देखते हैं कि 3 तरह के हमारे पास आते हैं इसमें सिनेरियोज, जिसमें सम मदर्स जो हैं दे कैन नेविगेट स्मूथली, सम मदर्स नेविगेट विद स्ट्रगल एंड सम मदर्स आर नेविगेटिंग इन एम्बिग्विटी। इसको बस ब्रीफली देखते हैं, क्योंकि अगेन मुझे वो मीटिंग में पहुंचना है, जिसकी वजह से मैं शायद अपनी प्रेजेंटेशन पूरी नहीं कर सकूंगी अभी, लेकिन बाकी चीजें क्योंकि डिस्कस हो गई हैं और ये चीजें थोड़ी सी जो मुझे लग रहा था मिसिंग है, मैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर रही हूँ कि कुछ मदर्स का तो बड़ा अच्छा सेट सीन होता है, और ये ज्यादा वो मदर्स हैं जो कि काउंसलिंग जिनकी हुई भी होती है वेल बिफोर इन टाइम, प्रेगनेंसी से जिनकी शुरू हो जाती है, वो पहले से मोटिवेटेड होती हैं कि उन्होंने ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को, और उनकी अर्ली इनिशिएशन भी होती है, उनको कोई और इश्यू भी नहीं होता। तो उनकी जो जर्नी है
वो एक बड़ी पॉजिटिव जर्नी होती है जिसमें इतनी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज नहीं होती, ठीक है। और ये हेल्प करती है इन स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द इन्फेंट एंड द मदर एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विद देयर इन्फेंट। तो इसमें जो है ये एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है मदर और बेबी का, जो कि बहुत स्मूथ होता है। बहुत सारी मदर्स जो हैं दे आर नेविगेटिंग विद द स्ट्रगल, और मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ मे भी बाहर भी, बट मुझे जो अपनी सोसाइटी का एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मदर्स जो हैं एट टाइम्स उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और ये वो मदर्स हैं जो कुछ मोटिवेटेड तो होती हैं मगर उनकी काउंसलिंग नहीं हुई भी होती, अर्ली इनिशिएशन नहीं हो पाती ड्यू टू एनी ऑफ दिस रीजन के प्री टर्म है बेबी, या फिर सिजेरियन सेक्शन है, या कोई भी और रीजन हो सकता है। और या फिर ये कि कई दफा जो बड़े हमारे होते हैं वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको बहुत शौक होता है, वो फीडर उन्होंने रखे हुए होते हैं, फॉर्मूला मिल्क उन्होंने खरीदा हुआ होता है, और उनको होता है कि सबसे पहले जो है वो उसको दूध जो है वो पिला दें फीडर से। और ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। मैं तो ये प्रेफर मतलब मैंने खुद प्रैक्टिस किया है कि मैंने तो फीडर जो है वो खरीदा ही नहीं था, इसलिए क्योंकि फीडर मैंने ये देखा कि जब होता है आपकी बॉटल होती है तो मदर्स या ग्रैंड मदर्स या कुछ, वो एक जब बच्चा रो रहा होता है तो वो एक नेचुरल एक होता है कि चलो जी फीडर दे दो। और इवन बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो एक भी चीज देखी गई है वो ये है, आई एम सॉरी टू से इधर, लेकिन ये प्रैक्टिस हो रही है कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो फ्री सप्लाई करती हैं फॉर्मूलाज। हमारे डॉक्टर्स के, मैंने कई डॉक्टर से सुना है, पीडियाट्रिशियन से, कि हम बच्चों को हॉस्पिटल में बता कर आते हैं, सॉरी नॉट बच्चों को, मदर्स को, कि खुद फीड करना है, बट जब हम अगले दिन जाते हैं तो हर मदर की जो साइड पे एक फॉर्मूला का डब्बा पड़ा हुआ होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द फार्मेसी। और उसके बाद आप बच्चे को अगर इनिशियली फीडर की आदत डाल देते हैं तो ड्यू टू निपल कंफ्यूजन, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है रिफ्लेक्स ही जब नहीं आता, मदर की मिल्क प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, तो वो चीज़ जो है वो आगे फिर बहुत मुश्किल हो जाती है मदर के लिए कि वो ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू कर सके। तो ये सारी चीजें जो हैं दे कैन ये कॉज प्रॉब्लम्स, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम और डिफिकल्टी फेस्ड बाय द मदर्स वाज दैट द इन्फेंट प्रीमेच्योरिटी, कॉम्प्लिकेटेड ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर इन्फेंट जो है, ये जो मैंने आपको भी बातें बताई हैं कि फॉर्मूला मौजूद था, बड़ों ने दे दिया, शौक में दे दिया, या इस किस्म की कोई सिचुएशन हुई, तो बच्चा जो है उसको जब एक इजी चीज मिल रही है, उसको एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी, तो फिर वो सब करने की एफर्ट नहीं करता। इसके अलावा जाहिर है प्रीमेच्योर बच्चों में और इश्यूज होते हैं, जैसे कि डिस्कस भी हुए हैं कि वीक सक हो सकती है, और द इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड द इन्फेंट कुड बी कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए क्योंकि अर्ली नहीं इनिशिएट किया गया। माँ कराना चाह रही है, बच्चा नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है वो अब उसको निपल कंफ्यूजन हो गया, उसको एक आसान चीज की आदत पड़ गई है। तो ये सारी चीजें, इससे मदर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, मिल्क प्रोडक्शन और इफेक्ट होती है, और ये सारा कुछ। फिर कई दफा ये होता है कि ना मदर को कुछ पता होता है, एक एम्बिग्विटी में, एक अजीब सी कंफ्यूज्ड स्टेट के अंदर वो शुरू करती है, और उसको नहीं पता कि कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं जरूर कराओ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बहुत मुश्किल है। तो ये जो है कई दफा कुछ मदर्स जो हैं उसमें वो उसको कूप कर लेती हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करती हैं, और वो कहती हैं हमें उसका रिवॉर्ड मिल गया है। और कुछ जो है वो उन्हें शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, कुछ उसको उस टफ और डिफिकल्ट सिचुएशन को एनकाउंटर कर लेती हैं, उसके साथ कूप कर लेती हो जाती है, और कुछ जो है वो नहीं कर पाती। तो असल चीज इस सारी के रिजल्ट में ये है कि मदर्स जो हैं दे कैन इन तीनों में से कोई भी एक जो है they can be navigating through one of these ways, and it is important that each mother found her own way in breastfeeding, and awareness of the diversity of breastfeeding experiences and supporting relationships. ये चीज अर्ली काउंसलिंग मदर की Dr. Samra, kindly unmute yourself. जी आपको अभी डिस्कनेक्ट हुआ है, सॉरी मैंने अभी देखा जी अभी हो गए, जी बिल्कुल। अच्छा चलिए, मैं फिर बस इसको एंड यही करती हूँ कि ये काउंसलर्स का जो भी, अगर वहाँ पर कोई डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ है,
ये देखना है कि मदर जो है अगर उसको वो लैक्टेशन मतलब पोस्ट डिलीवरी ही वो देख रहे हैं तो वो कहाँ पर स्टैंड करती है और उसकी हेल्थ कैसी है, उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है और उसको न्यूट्रिशनली किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। ज़ाहिर है पिछली चीज़ तो उस वक्त नहीं है, काउंसल कितना किया जा सकता है और इन तीनों में से वो कौन सी उसकी स्ट्रगल कैसी होगी और उसमें उसको कैसे हेल्प किया जा सकता है। तो ये चीजें जो हैं मे बी साइकोलॉजिस्ट क्योंकि बाय टू हेल्थ केयर टीम का पार्ट होते हैं वो, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं समझती हूँ कि अगर ये चीजें जल्दी हो जाएं आपके कॉलेज लेवल के ऊपर, आपके हाई स्कूल लेवल के ऊपर से एक बच्चियों की हेल्थ के ऊपर फोकस हो, बच्चियों को मोटिवेट किया जाए तो ये चीज बहुत बेहतर हो सकती है एज कम्पेयर टू के बस आप कह दें कि हर सूरत ब्रेस्ट फीडिंग करानी है और उसके ऊपर उससे पहले कोई काम ना किया गया हो। अब जो बाकी स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स तो भी बहुत सारी हैं बट मेरा ख्याल है कि यही चीज के जो न्यूट्रिशनल आगे चीजें हैं वो सब बताई जा चुकी हैं और मेरा टाइम भी कुछ अप हो गया है। मेरा ख्याल है अब शिफा है इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें और वो उसमें जो चीजें रह गई है मेरा ख्याल है शिफा आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो और मजीद इसमें ऐड डेफिनेटली आप करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Samra. This was really an eye-opening. You made an interesting note that I guess called everyone's attention to this important issue. Now, I would like to request Ms. Shifa Ali, a clinical dietitian at Itfaq Hospital. She has more than 10 years of experience in this field. She is also a gold medalist. She has done her master's and postgraduate diploma in dietetics from College of Home Economics and did her MPhil in public health from University of the Punjab. She is a registered dietitian and nutritionist at Pakistan Nutrition and Dietetic Society. Ms. Shifa, over to you. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। इंडीड बहुत एक ऑनर की बात है और एक बहुत ही अहम अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचा सकूँ और अपना एक्सपीरियंसेस और अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ। न्यूट्रिशन कंपोजिशन के ऊपर काफ़ी बात हो चुकी। मैं ज़रा इस पे जो हमारे टॉपिक के अंदर सपोर्ट का एक वर्ड यूज़ हुआ है उसके ऊपर कुछ बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे कुरान पाक का एक हवाला भी दिया गया कि जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया और ये हुक्म है कि 2 साल तक माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। तो ये वो पहला हक है जो कि माँ के ऊपर है, बच्चे का हक कि वो उसको दे और ये फर्ज अपना पूरा करे। लेकिन यहाँ पे हमें एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भूलनी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ जो हमारा सोशली और कल्चरली जिस तरह से हम ब्रेस्ट फीडिंग के सारे इश्यूज को हम देख चुके हैं और वो है कि हुक्म दिया गया है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तो इस वक्त जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि लैग कर रहा है। शायद एक खवातीन को विमेन एम्पावरमेंट और आगे बढ़ने और आगे जाने के लिए बहुत उनके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो करना भी चाहती हैं और फैमिली की तरफ से भी उनके पर होता है, लेकिन कहीं हम देखते हैं कि उसमें माँ और बच्चा अलग हो जाता है जिसकी वजह से ये सारे प्रेशर्स आते हैं। मसलन मैं अब यहाँ पे एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ और मैं यहाँ पे नोट करती हूँ मेरे पास बहुत से ऐसे मेरे कोलीग्स आती हैं और वो ये कंप्लेन करती हैं कि जी हमारा मिल्क प्रोडक्शन इनफ नहीं है। तो द सिंपल क्वेश्चन व्हिच आई आस्क देम कि आप की क्या रूटीन है, फीड कैसे कराती हैं? तो वो सुबह कराती हैं, फिर वो ड्यूटी पे आती हैं एंड देन दे गो बैक टू देयर होम्स एंड देन दे अगेन गेट होल्ड ऑफ देयर बेबी एट अराउंड इवनिंग एंड 7 PM। या जब इतना लंबा गैप आ जाता है तो वो एक्सपेक्ट आई डोंट नो कैसे कर रहे हैं कि जी ये दूध पिलाने का सिलसिला जारी रहेगा। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि हम बच्चों को और माँ को उनको इकट्ठा रखने का कोई सिस्टम हो। सबसे पहली बात ऐसे जैसे हमारे डे केयर सेंटर्स हों, यानी अगर माँ ने अगर काम करना भी है तो बच्चा उनके साथ होगा, क्योंकि लेट डाउन रिफ्लेक्स या मिल्क की प्रोडक्शन जो है ये हमें अक्सर कहा जाता है जी ऐसी फूड्स बताएं, आप डाइटिशियन है, कोई ऐसी फूड्स बताएं जिससे दूध की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। ये फूड से ज्यादा इमोशंस के साथ होता है। ये ज्यादातर दूध पिलाने जितना ज्यादा पिलाया जाता है उसके साथ इसका ताल्लुक होता है। नाइट फीडिंग्स जो हैं उसके ऊपर रिसर्चेस हैं कि आप माँ जितना ज्यादा पिलाती है दूध उतना ही ज्यादा लेट डाउन रिफ्लक्स होता है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम माँ की डाइट के ऊपर बात करें तो उसके अंदर विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जो है उसके ऊपर यूनिसेफ ने यूएन ने बहुत सा काम किया है, बहुत से उसको कहा है, क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो कि लैक्टेशन और
प्रेगनेंसी की डिमांड्स की वजह से ये वल्नरेबल ग्रुप बन जाता है 15 years to 49 years of age। अच्छा, रिसेंटली 2021 इसी साल में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन का इदारा है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला है which is an indicator which can be used in different kind of researches as well, a minimum diet diversity for women। इससे पहले ये बच्चों के लिए अवेलेबल था यूनिसेफ की तरफ से, लेकिन अब ये खवातीन के लिए आया है। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि बहुत ही सिंपल सा इजीली यूज होने वाला डायकोटमस ये एक इंडिकेटर है, जिसके अंदर 10 फ्रूट ग्रुप्स का बताया गया कि एटलीस्ट इन 10 फ्रूट ग्रुप्स में से खवातीन जो है वो 5 कम से कम ले रही हैं। और अगर हम उसको लैक्टेशन के सिनेरियो में देखें कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ही है किसी औरत ने, तो हमें उसकी जो एडिशनल कुछ कैलोरीज हमें जा रही हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड से आ रही हैं। तो उसके अंदर जैसे हम ये समझते हैं कि उसका कैल्शियम रिच फूड जरूर हों, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स हों, प्रोटीन रिच हों, इस तरह की चीजें हों जो कि उसकी डाइट को अच्छा रखें। क्योंकि हम खवातीन को ये वाली कुरान पाक की तो बताते रहते हैं कि 2 साल तक पिलाना जरूरी है, लेकिन हम ये वाला पार्ट भूल जाते हैं कि उनको सपोर्ट की, उनको गुड न्यूट्रिशन की, उनको रिलैक्स रहने की, उनको बेबी के साथ टाइम ज्यादा गुजारने की भी उतनी ही जरूरत है। तो ये चीज बहुत अहम मैं समझती हूँ कि है। और इसी तरह से हमारे पास बहुत सी चीजें न्यूट्रिशनली ऐसी हैं कि जिसके अंदर हम यानी पहली चीज अगर मैं कहूँ कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो वो माँ और बच्चे का ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट है, दौरानिया उसका बढ़ाया जाए। जॉब आवर्स में भी अगर अब डे केयर सेंटर हो तो वो चीज। दूसरी चीज के हम लोग डाइट में क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं कि मिल्क की क्वालिटी बेहतर हो। तो उसमें पहले तो मैं सबसे पहले तो एक चीज ये मेंशन करना चाहूंगी कि 80% ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जो हैं वो वैसे ही विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। और एक लाहौर की स्टडी थी, उसके अंदर देखा गया कि जो लैक्टेटिंग विमेन है वो 75% ऑफ देम वर डेफिशिएंट इन विटामिन डी एंड 93% वर हैविंग ऑस्ट्रोपीनिया, यानी कि उनकी बोन्स वीक थी। तो ये अब विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ ही उस तरह से वो लैक्टेशन में दाखिल, प्रेगनेंसी में लैक्टेशन में दाखिल हो जाते हैं। और फिर ज्यादातर जो हमारी खवातीन अगर आप लैक्टेशन में देखें ब्रेस्ट फीडिंग वाली, वो किस तरह की खुराक ले रही होती है, वो बहुत ही चीप किस्म के कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज इजीली अवेलेबल दिए जाते हैं उनको। यानी ज्यादा खाने के नाम पर उनको ऐसी न्यूट्रिएंट डेंस की बजाय बस जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, चावल ज्यादा खा लेंगे, उस तरह की चीजें जिसके अंदर उनके बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे वो नहीं होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि डीएचए के ऊपर बात हो रही है। डीएचए जो है वो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को, उसको ब्रेनी बनाने में, उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एनहांस करने में बहुत अच्छा है। तो ये प्रेगनेंसी में भी अगर हम दें तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर हम माँ को भी फिश खिलाएं या फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स भी अगर हम उसको अच्छे दे दें तो इससे क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बढ़ जाती है और वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जो पहले 2 साल तक बहुत क्रूशियल होती है तो वो बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरी चीज जो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर हम विटामिन डी के भी, अगर हम एनरिचमेंट खातून को भी विटामिन डी का अपना स्टेटस अच्छी रखती हैं तो ना सिर्फ वो जो कैल्शियम अपनी डाइट से ले पा रही हैं, जैसे हमारी कैलोरीज इंक्रीज जो होता है वो तकरीबन 300 to 400 कैलोरीज इंक्रीज सिर्फ लैक्टेशन में करना होता है। लेकिन हमारी माएँ जो है वो अननेसेसरी वेट गेन कर लेती हैं और उसके अंदर बहुत सी चर्बी होती है, लेकिन वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ से डेफिशिएंट होती हैं। तो होना ये चाहिए कि वो जो थोड़ा सा कैलोरीज इंक्रीज है वो आप किसी रिच फूड सोर्सेज से आ रहा हो, जैसे डेयरी से आ रहा है या फिश से आ रहा है या प्रोटीन का कोई आप बढ़ा दें उसमें से ले लें। तो विटामिन डी भी अगर वो एनरिच या तो फोर्टिफाइड मिल्क या फिर हम उनको सप्लीमेंटेशन या उनकी जो डेफिशिएंसीज को कवर किया जाए तो बच्चा शुरू से ही उसकी बोन्स जो हैं वो उसको भी ठीक उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स मदर के थ्रू पूरी हो सकती हैं। लैक्टोफेरिन का एक जिक्र हुआ कि लैक्टोफेरिन जो है वो मिल्क के अंदर पाई जाती है। लैक्टोफेरिन एक इतनी अच्छी प्रोटीन है और बहुत ज्यादा मिल्क के अंदर पाई जाती है और आप ये देखेंगे कि फॉर्मूला मिल्क वाले उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट्स में बताया कि जी हमने इसको डाला है अपने फॉर्मूलाज में, कुछ 1-2 कंपनीज ने, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह से वो नेचुरली मदर्स मिल्क में पाई जाती है उसके बहुत ज्यादा फवाइद हैं और वो बहुत ही अच्छी एक चीज है जो कि माओं को मिलती है। तो पहली चीज तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत से एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है कि हम माओं को काउंसिल करें कि जी आपने क्या क्या खाना है और किस तरह से अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। फिर हम उनकी फैमिलीज को काउंसिल करें कि आपने इनको सपोर्ट करना है, शी नीड्स अ गुड डाइट और उनके डिसीजंस किस तरह से
फिर हमारे जो उनका जो वर्क प्लेस है उसमें वो किस तरह से अपने बच्चों को साथ रख सकती हैं। फिर गायनेकोलॉजिस्ट या जो न्यू मदर्स हैं, मैं समझती हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मुझे थोड़ी सी लैकिंग नजर आती है कि एडिक्वेट काउंसलिंग शुरू से ही बच्चियों को सेंसिटाइज किया जाए, ना सिर्फ बच्चियों को बल्कि मेरा ख्याल है एक फैमिली सेशन भी जरूरी होता है, पूरी फैमिली को सेंसिटाइज किया जाए कि ये ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए और मदर की हेल्थ के लिए, और इसमें सारी फैमिली जब तक साथ नहीं देगी तो ये इतने ठीक तरीके से अचीव नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि 2 साल तक ये मामला ब्रेस्ट फीडिंग हो और बच्चा जो है उसको ये सारा अच्छी नरिशमेंट मिले, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, एक पॉइंट उसमें हुआ था डिस्कस, नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ही उसका फायदा है, यानी बच्चे आप देखेंगे कि नए जो होते हैं न्यूबॉर्न्स, एट टाइम्स दे सफर फ्रॉम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस उनको हो जाता है बिकॉज बिलीरुबिन की मिकदार ज्यादा, उसमें भी ज्यादा से उसका भी हल सिर्फ दूध पिलाना ही है, अगर माँ ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाती है तो वो खुद ही से क्लियर होता जाता है। तो ये कुछ सर्टन ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, एंड आई एग्री टू डॉक्टर समरा कि हम लोग जितना इसके ऊपर वेबिनार्स कर रहे हैं और जितना हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इट्स हाई टाइम वी नीड एन एक्चुअल चेंज, वी नीड एन एक्चुअल चेंज इन द फिगर्स वी आर सीइंग, कि हमें चाहिए कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए थोड़ी सी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा माँ की मेंटल हेल्थ के साथ, बच्चे की इम्यूनिटी के साथ, और आगे जिस तरह से हम नए नए किस्म की बीमारियां देख रहे हैं उनसे बचने के लिए बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि फैमिली यूनिट को भी, उसकी बॉन्डिंग को बढ़ाने में भी इसका एक बहुत अहम रोल है। तो आई थिंक देयर आर सर्टेन डिफरेंट एरियाज विच नीड टू बी वर्क, और हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरा ओन करने की और उसमें एक्टिवली काम करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Ms. Shifa, for sharing the practices that should be integrated into maternity care to increase the likelihood that, as you said, for a woman to initiate and sustain breastfeeding. Now, I would like to introduce our second last speaker, Dr. Tehim Fatma. She is a senior registrar pediatrics at Children's Hospital and Institute of Child Health, Faisalabad. She is a graduate of King Edward Medical University, and she did her specialization in pediatrics from the College of Physicians and Surgeons, Pakistan. She has been associated with Royal College of Pediatric and Child Health, UK. She is also playing her role for the community as an active member of Pakistan Pediatric Association. Madam, kindly share your views. Dr. Tehreem, please unmute yourself. Am I audible now? Yes. Thank you so much, madam. I am really thankful to the team of LCWU and for inviting me on talking on this topic. I'm really thankful to you. I would like to share my screen first of all. Is it visible? Is my screen visible? Yes. Okay, thank you so much. Most of the topics basically they have been covered by the previous guest speakers. I would mainly concentrate my talk only on the importance of breastfeeding, specifically in their health benefits in infants and children. So beginning my talk, I would like to focus and begin with the recommendations of the WHO. So the WHO recommends that breastfeeding, it should be initiated within first hour of birth, and also WHO recommends that the child should be fed exclusively breastfed for the first 6 months of life. Exclusive breastfeeding, it means that the child should only be getting the mother feed and no added water or any juice. It should be there and should continue for at least first 2 years of life. We already know, with the addition of solid diet, it can be introduced at the age of 6 months. So with these recommendations,
we continue our discussion. I cannot move my slides. Dr. Tareem, you can stop slide share then, hopefully. Yes, now we can Yes, see the it's next. moving now. Thank you so much. The benefits of breastfeeding, they are there for the baby as well as the mother. The breastfeeding or the breastfeed, it for the baby, it is a complete meal. It has ideal nutrient composition. Already discussion has been done on this topic about its composition. I would like to only demonstrate that the main protein in the breast milk is whey protein. As compared to the cow's milk, the whey protein is much higher in human milk, and the main protein in cow's milk, it is casein protein, which is easy to curdle and it settles down in the stomach of the baby. That's why the mother feed is easy to digest, and it causes less colic and less abdominal distension in the babies. Other proteins in breast milk, they have high biological value. They are also very important, including the immunoglobulins and also other proteins that I will demonstrate later on. There are essential fatty acids that are present in the breast milk, especially the long chain fatty acids, the docosahexaenoic acid and the arachidonic acid. They are important for the cognitive and visual development of the children. Lactose is the main component or the main carbohydrate of breast milk, is also easily digestible. That's why the babies who are on mother feed, the mothers, they say that they feel hungry very often. So these easily digestible proteins and carbohydrates, they make this baby hungry, but this is totally natural. So we should teach the mothers that this is a natural phenomena that occurs with the babies who are on human milk or the breastfeed. In addition, the breast milk has also immunological, antimicrobial, and anti-inflammatory properties, because there is secretion of secretory IgA, lactoferrin, lysozyme, and the macrophages and lymphocytes in the breast milk that provide immunity to the newborn baby. The breastfed babies, they are protected against the infections, especially diarrhea, pneumonia, ear infections, and in preterm babies, they are protected against the necrotizing enterocolitis, that is the inflammation of the gut. In addition, breastfed babies, they have long-term benefits of the breastfeed. They have better cognitive and visual development. There are decreased chances of diabetes, type 2 diabetes, obesity, hypertension later in life. And in addition, they have reduced risk of developing allergy, especially with the positive family histories. And also breastfeeding, it delays the onset of wheat allergy, that is the celiac disease. Here there is a table in which I have shown the comparison of human milk with different types of other milk, which is the cow's milk and the modified milk. The only takeaway point or the takeaway point here is that consider that here that the human breast milk, it is low in protein as compared to cow's milk and other types of milk, and the main protein is whey protein and is rich in carbohydrates. And see here the sodium, potassium, phosphorus, and calcium levels, they are much lower in human milk as compared to the cow's milk. It means that it provides less burden on the kidneys, immature kidneys of the neonates. That's why it is beneficial, providing low renal solute load. And regarding the colostrum, it has been described previously also that is a very important feed that comes within first 48 hours of birth, is also known as the liquid gold, because it is rich in proteins, and its color comes from the proteins it contains, and it provides immunity to the newborn baby. It should not be discarded. We have emphasized on this point previously also by other guest speakers has been emphasized. The benefits of breastfeeding for mother are also
also there we know that it is economical and is convenient to use, hygienic, and also promotes maternal to child bonding and reduces the risk of ovarian and breast cancers. That's why we are focusing so much on promotion and support of the breastfeeding in the babies. Regarding the contraindications to breastfeeding in babies, there are very few contraindications. Contraindications are usually the maternal and neonatal diseases. The absolute contraindications in breastfeeding are the maternal diseases like HIV infection or AIDS. And mind you, this contraindication is not in developing countries like ours. It is in the developed countries. In developing countries, the risk of morbidity and mortality is much higher if the child dies from malnutrition by not taking the mother feed. Similarly, the relative contraindications for breastfeeding in when the mother is ill, they also include active maternal TB infection. But when the mother starts taking TB medication, she becomes non-infectious after 2 weeks of taking medicine. Then she can safely breastfeed her infant. And other relative contraindications, they also include the drug abuse by the mother and also alcohol intake by the mother. And let me mention here that the hepatitis B and C, they are not the contraindications for breastfeeding. The neonatal conditions like galactosemia, they are the absolute contraindications for breastfeeding, in which galactose contained in the milk, which is a part of lactose, it should not be given. It is the absolute contraindication. Other inborn errors like phenylketonuria and congenital defects like cleft lip and palate, they also are the relative contraindication. But the breast milk substitutes, they should not be started in these babies without consultation by a child specialist or a physician. For the promotion of breastfeeding, certain selling points should be kept in mind, that the child should be clearly awake and alert when feeding, and there should be presence of appropriate coordinated suck and swallow reflex. ये ना हो कि बेबी सो रहा है और उसको फीड कराया जा रहा है, देख लिया जाए कि वो बीमार तो नहीं है, उसकी कंडीशन ऐसी तो नहीं, कोई डिजीज तो नहीं है, या वो प्रॉपर जाग रहा है और उसको भूख लग रही है, तब उसको फीड कराया जाए. In addition, the correct positioning and latching techniques, they have already been described by Dr. Mudassra. They are important to be taught to the mother. Regarding breastfeeding, the mother should know, it is the duty of the healthcare professionals, it is our duty to teach her that the breastfed babies, they are hungry every 2 to 3 hours at least for first 3 months of life, and they should be breastfed for 8 to 12 times a day. And the indications or the indicators that demonstrate that the child is adequately breastfed, they include that the child sleeps in between the feeds and wakes up again when the child is hungry, and there are at least 6 to 8 wet nappies per day. Regarding the stool habits, the child can pass stool immediately after taking feed when the child is on mother feed, or some babies, they develop the habit of passing stool second day or third day, so it is not very important. And for the successful breastfeeding, I have already mentioned exclusive breastfeeding is important. Extra water and juice should not be introduced. Good maternal nutrition should be emphasized. In addition, social and emotional support for the mother, it should be there. The 10 steps to successful breastfeeding, we already know, we have to implement them. Various international national policies are there. The main takeaway point is in these 10 steps is that all the healthcare staff in the hospitals or the baby friendly hospital initiative that has been taken by the government, these 10 steps, they should be implemented. The healthcare staff should be trained enough and skilled enough to guide the mothers that they should initiate the breastfeeding within first hour of birth, and in addition they should maintain the breastfeeding even without the baby. And there should be no introduction of artificial teats or dummies or the breast milk substitutes, because already we have discussed that it causes nipple confusion.
There is an international code of marketing provided by the WHO that prevents the marketing and the advertising as well as the sale of the breast milk substitutes in the hospitals and directly to the public or the parents. So there should be no, this is this is illegal. It should not be, there should be no free supply to the hospital or the mothers. And even if they are selling their products, it should be mentioned on their labels that the best milk or best diet for the babies is the breast milk, and the prescription of any breast milk substitute should be only there in case of any diseases of mother or the child that I have already mentioned. I would like to end my talk by talking about the common myths that already have been discussed regarding the maternal diseases. I have discussed the relative and absolute contraindications for breastfeeding, and especially it should be mentioned that kept in mind that hepatitis B and C, they are not the contraindications for breastfeeding. And breast milk testing already has been discussed by Dr. Madasra. Various quacks in the rural areas, they ask the mother to test their milk and provide them with fake reports that your breast milk is poisonous, it should be discarded. This is not the case, and this practice should be discouraged. So with this and with the message of advising all the mothers to promote breastfeeding, I would like to sign off, and thank you so much. Thank you so much, Dr. Tehreem, for sharing your helpful expertise on this matter. Now, I would like to request our last speaker, Dr. Nashma Shahi, to share her thoughts with us. Dr. Nashma, over to you, please. Dr. Nashma, kindly unmute yourself. We can't hear you. Thank you so much for giving me another chance of for elaboration of my topic. And all the topics, they are covered nicely by my colleagues. Now I want to add something in it. First of all, there are the two types of the milk, that is foremilk and hindmilk. The foremilk, the milk secreted at the start of the feeding is called foremilk. It's watery and rich in protein, sugar, vitamin, and minerals, and it satisfies the baby's thirst. And the hind milk, which comes at the end of the feed, rich in fat content and provides more energy, and it satisfies the baby hunger. For optimal growth of the baby, both foremilk and hind milk, they are necessary. So, and there are the four key points in position for making the position during breastfeeding, that baby's head should be in line with the body, and whole body of the baby should be well supported, and the baby turns towards the mother, and baby's abdomen should touch the mother's abdomen. And burping is also very necessary after feeding, and it should be done at least 15 to 20 minutes or until the baby burps. And there are the advantages to the infants and the mother. They are nicely covered by other colleagues, and contraindications as well. I want to discuss some issues during the breastfeeding. These include the sore, breast engorgement, breast abscess, and not enough milk. The inverted nipples, they are nicely covered by other colleagues. And the treatment is the same as the breast. And the other is the sore nipple. It is caused by the incorrect attachment of the baby to the breast. A baby who sucks only at the nipple and does not attain enough milk, so he sucks more vigorously, resulting in the sore nipple. Pain during feeding and fissure and cracks lead to the infection at nipple. Treatment is correct positioning, correct attachment, and hind milk should be applied to the nipples after feeding. And nipples should be allowed to heal between the feeds. The other is the breast engorgement. If the feeding is delayed, infrequent, or poor attachment, then milk accumulates in alveoli. As milk production increases, it exceeds the capacity of the alveoli to store it, so the breast becomes swollen, hard, warm, and painful. The treatment is early and frequent feeding, local warm water packs, but not more than 15 minutes,
and paracetamol can be used to relieve the pain and gently express the milk to soften the breast. The other is the breast abscess. If the breast engorgement is prolonged or persists, then it leads to the breast abscess, and it presents with the high-grade fever and tenderness in the breast. The treatment is analgesics, antibiotics, and if there is a wide abscess, then it must be incised and drained and continue feeding from the other breast. The mother complains often about that there is not enough milk, and the treatment is only reassurance and psychological support if the baby gaining weight and passing the adequate amount of the urine. And the causes includes the same as not breastfeeding properly or too short breastfeed, poor position, breast engorgement. Treatment is increase the fluid intake and reduce the mother stress, massage the breast, and treat the painful condition. Metoclopramide or domperidone may also be used. This was all about. Thanks for. Thank you so much, Madam. You have clearly highlighted the need to ensure that all women receive optimal breastfeeding support during prenatal care, during their maternity stay, and after the birth occurs. Thank you so much. Now, to conclude today's webinar, I would like to request Dr. Mohammad Afzal, Dean Faculty of Arts and Social Sciences, to please give closing remarks. Sir, over to you. There is no sound. Among women of the Lahore, Bismillahirrahmanirrahim, the webinar on the topic Breastfeeding Protection, Support and Promotion, a Sustainable Approach, is a part of a series of 100 celebrations of Lahore College for Women in the University of Lahore. It will create awareness among women of Lahore College and rest of the world. The Faculty of Arts and Social Sciences has always played a constructive role in creating healthy environment, healthy approaches among its students to become a responsible both mothers and good citizens. Thanks to all speakers for giving their coherent views about the benefits of breastfeeding. I hope through this webinar, the Department of Home Economics has successfully highlighted the importance of such a lively campaign. At the end, I again say thanks to all speakers and congratulations to Home Economics Department, especially Head Chairperson Ms. Mary, conducting webinar on such a lively topic. Thank you very much.